So if you will observe the relation between the accelerating potential and the collector current, what was found was this, that although on increasing the accelerating potential, the value of current increased, but then at a particular voltage value, there was a sudden drop in the current. Then on further increasing, the value increased, again increased, and then there was again a further drop. So it was like this. We were having multiple drops in the current values. There were multiple drops in the current values. Okay, and this happened at a particular voltage value, because we were using the accelerating potential to increase the kinetic energy of the electrons. तो kinetic energy बढ़ने के बाद यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पहुंच पाए? The only reason is that these electrons must have given their kinetic energy to the other present things, which are mercury atoms. तो inelastic collision के थ्रू mercury atoms को अपनी kinetic energy transfer कर दी, but mercury atom is choosy. So atoms are choosy. Choosy means they only like a particular type of energy. मतलब they only like a particular value of energy. उससे पहले भी तो accelerated electrons थे. They were not liking it. So whatever you have, whatever the type of atom you have, they are very choosy in form of accepting energies. So electron की कोई भी energy ले लेंगे. Mercury atoms ऐसा नहीं था. They took only few particular type of energy, only particular type of particular value of energy, and if you go by that, it corresponds to the 4.9 volts. तो जब आपका accelerating potential was 4.9 volts, यानी इनकी एनर्जी कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो गई 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये जो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जब आपने बढ़ाई, फॉर एग्जांपल आपने 0 से पहुंच गए 4.9 वोल्ट्स पे, देन दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड फुली, या कम से कम काफी बड़ा हिस्सा इस एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेगा मरकरी एटम, और थोड़ी देर बाद इस ट्यूब में से डीएक्साइटेशन की वजह से 254 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी. 254 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी. ठीक है, और 254 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट रेज का अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करें और उस एनर्जी को आप कैलकुलेट कर दें, फिर पता लगाएं कि ये इसकी वेवलेंथ क्या होगी. वेवलेंथ पता है आपको, आप एनर्जी कैलकुलेट करें, so you will get your answer. ठीक है, so you have, what did I say, 254 nanometers. So using h nu, which is given, like you can use nu is equals to, yeah, c is equals to nu into lambda. You will get to know what your value of frequency is, that c by lambda is equals to nu. उसको h से multiply कर देंगे तो energy आ जाएगी. So 3 into 10 to the power 8 divided by 254 nanometers means 10 to the power minus 9 से divide देना चाहिए. I got my frequency and now I have to just multiply it with h. So I got my answer, but my answer is not exactly in electron volts, it's in joules. So I will have to then 1.6 10 to the power minus 19 से divide दिया. I got 4.891 electron volts. तो जो एक्साइटेशन के बाद डीएक्साइट होने पर मरकरी एटम से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं, उनकी एनर्जी और जो एनर्जी आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर दी थी, दैट इज सेम. इट मींस द एटम वाज चूजी इन एक्सेप्टिंग द वैल्यूज. इसी तरीके से दूसरी जो वैल्यू मिलेगी, दैट वुड यू विल फाइंड इट 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड इट वुड गो ऑन. Fine. So this type of model was a confirmation that atoms accept particular quanta or quantum of energy, and it depends on type of material. For example, अगर आप नियोन भर देंगे इन वेपर्स में, मरकरी की जगह नियोन भर देंगे, then it would be giving you the excitation levels of neon. जैसे 4.9 excitation level रहा किसका? Mercury का. 9.8 is another excitation level of mercury. You will get neon.
And this experiment was then repeated on a number of materials, and it confirmed that the type of atomic model which Bose is suggesting, that there are fixed orbits, there are fixed energies, is true. Okay, so यहाँ से शुरू होती है क्वांटम फिजिक्स. ये हम कह सकते हैं प्री क्वांटम फिजिक्स से कॉन्टेक्स्ट मिल गया हमें कि अब चीजें बहुत नियत मात्रा में ही आएंगी. Now we will try to build upon our logics and physics of quantum mechanics in Unit 4. Thank you so much, all of you.